Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture 4 of digital signal processing. In today's lecture, we will start chapter 2 of the progress book. So, we will study about some elementary discrete time signals as well as we will discuss about the representation of discrete time signal. So, the discrete time signals can be represented in three different ways. Number first is functional representation. Number one, functional representation. Okay. So सबसे पहले हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके अलावा हम टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और there are so many representations, so we will discuss it today. Representation of discrete time signals. ठीक है. Number first is functional representation. Number two is tabular representation. Number three is sequence representation. Okay. So now let's come toward functional representation. So let's suppose we have a signal x of n that is 1 for n is equal to 1 comma 3. It is 4 for n equal to 2 and 0 else where. So this is called the functional representation. जब आप किसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को इस तरह लिख लेते हैं तो इसको हम फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. इसके बाद आपके पास आता है सीक्वेंस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. सो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आपके पास इस तरह होता है कि यहाँ पे आप लिख लेते हैं n, यहाँ पे आप लिखते हैं x ऑफ n. आप दरमियान से स्टार्ट करते हैं 0 से. n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. इस साइड पे -1, -2, -3 and so on. So x of n is equal to 1. So x of n is equal to 1 for 1 and 3. 1 and 3. And for n is equal to 2, it is 4. And it is 0 elsewhere. So it is 0. So this is another representation which is called tabular representation. So this is tabular representation of x of n, and another representation is sequential representation or sequence representation. So the sequence representation can be written as x of n is equal to 0, 1, 4, 1, 0, 0 and so on. यहाँ पे आप देखिए कि x of n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. जहाँ से x of n आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. सो वहाँ पे आप लोग एक एरो लगा लेते हैं, ठीक है. सो दिस एरो रिप्रेजेंट n equal to 0, ठीक है. This is called the sequential representation, ठीक है. इसके अलावा भी एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम लेक्चर 5 में स्टडी करेंगे,
ठीक है, यानी हम किसी भी सिग्नल्स को, डिस्क्रीट सिग्नल को एज सम ऑफ सैंपल्स लिख सकते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है ये अभी आप लोगों को इस लेक्चर में या लेक्चर 5 के स्टार्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, कि किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को अभी आप 3 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो चौथा तरीका है वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। पहला जो है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सेकंड जो है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, द थर्ड वन इज द सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन। फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन में आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि एक सापेन जो है दिस इज 1, जब आपके पास n 1 और 3 हो, 4 और n इज इक्वल टू 2, और इसके अलावा आपके पास एक सिग्नल 0 है। सो दिस इज वन रिप्रेजेंटेशन। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में आप सेम इस सिग्नल को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि आप इस तरह का एक टेबल बना लेते हैं। एक रो में आप n की वैल्यूज लगा लेते हैं, दूसरे रो में आप करस्पॉन्डिंग एक सापेन की वैल्यू लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 1 और 3 पे 1 है, तो 1 और 3 पे आप 1 1 लगा लिए, एक सापेन का एम्पलीट्यूड है। 2 पे आपके पास 4 है, तो 2 पे 4 लगा लिया, उसके बाद 0 है। सो दिस इज कॉल्ड दी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज द सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन। सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन में आपके पास जो n की इंफॉर्मेशन है वो इस एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एरो जहाँ पे पॉइंट करेगा इट्स मीन कि यहाँ से आपका सिग्नल इंडेक्स n इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। दिस इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। और इस साइड पे अगर है तो वो n इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू -2। सो इस तरह आप अपने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी ये पढ़ने के बाद हम कुछ एलिमेंट्री डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पढ़ेंगे कि जो बेसिकली आपके कोर्स में ये सिग्नल जो है यूज होंगे। सो वी विल स्टडी अबाउट सम एलिमेंट्री सिग्नल्स। नंबर फर्स्ट इज द यूनिट सैंपल सीक्वेंस। पहला जो एलिमेंट्री सिग्नल है उसको हम कहते हैं यूनिट सैंपल सिग्नल, ठीक है। इसको हम इम्पल्स भी कहते हैं, ठीक है। जो दूसरा सिग्नल है जिसको हम स्टडी करेंगे दैट इज यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल। और इसके बाद हम डिस्क्रीट सिग्नल, एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ये 3 सिग्नल्स हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज यूनिट सैंपल सिग्नल? यूनिट सैंपल सिग्नल कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया कि हम इसको अगर फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन से लिख के, तो यूनिट सैंपल सिग्नल का फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन ये होगा कि दिस सिग्नल इज 1 ओनली फॉर n इज इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 फॉर n नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी ये जो आपका यूनिट इम्पल्स सिग्नल है या यूनिट सैंपल सिग्नल है, इसकी फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन इस तरह है। इसको आप इस तरह ड्रा कर सकते हैं, दिस इज n एंड दिस इज 1, ठीक है। दिस इज अदर, यानी इसके अलावा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज यूनिट सैंपल सिग्नल। इसके बाद जो यूनिट स्टेप सिग्नल है, इस यूनिट स्टेप सिग्नल को आप u ऑफ n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये आपके पास डिफाइन है, दिस सिग्नल इज 1 फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 0 अदरवाइज, ठीक है। सो इस सिग्नल को अगर आप प्लॉट करें तो यू विल गेट प्लॉट लाइक दिस।
दिस इज 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं, दिस इज एक्चुअली यूर यू ऑफ एन, इसका ये रिप्रेजेंटेशन है। सो यानी यू ऑफ एन को आप लिख सकते हैं सब इस इम्पल्स के फॉर्म में। आप कैसे लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं यू ऑफ एन को सिग्मा एन, ये अगर सिर्फ इस सिग्नल को आप देखें तो ये क्या है, सिर्फ ये जो सिग्नल है ये यूनिट इम्पल्स है, ये भी यूनिट इम्पल्स है, बट दिस इज डिलेड बाय 1 यूनिट, प्लस सिग्मा एन माइनस 1 प्लस सिग्मा एन माइनस 2 प्लस सिग्मा एन माइनस 3 and so on. So it's mean you can write u of n as summation of impulses n equal to 0 to infinity sigma n minus, this is n naught minus n naught. So आपका जो यूनिट स्टेप सिग्नल है, you can write your unit step signal as a sum of unit impulse signals. तो आपका जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स जो है उसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल सिग्नल इज एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू ए की पावर एन। अब ये जो है डिपेंड करता है एन के ऊपर। अगर एन पॉजिटिव है तो ये एक्सपोनेंशियल जो है ये डिके होगा, या ये जो है एक्सपोनेंशियल राइज होगा, ठीक है। सो ये डिपेंड करते हैं आपके एन की वैल्यू के ऊपर। सो दीज वाज ऑल अबाउट एलिमेंट्री सिग्नल्स। हमने 3 तरह के एलिमेंट्री सिग्नल्स देखे। यूनिट सैंपल सिग्नल, ठीक है, ये आपके पास जो है दिस इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल, ये सिग्नल जो है एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। अब ये जो है एक्सपोनेंशियली राइज भी हो सकता है, यानी इस तरह का सिग्नल भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज एक्सपोनेंशियली राइज सिग्नल। सो ये डिपेंड करते हैं आपके पास इन के ऊपर कि इन जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल्स, कि हमने यूनिट सैंपल सिग्नल को देखा, यूनिट स्टेप सिग्नल को देखा। हमने ये भी देखा कि हम जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसको हम एज ए कम्बिनेशन ऑफ इम्पल्सेस भी लिख सकते हैं, और उसके बाद हमने ये देखा कि एक्सपोनेंशियल सिग्नल को हम कैसे लिख सकते हैं। Now, we have studied about periodic signal and aperiodic signal. So there is no need to define it again here. Now we will study about simple manipulations of discrete time signals. So let's suppose we have x of n, manipulation of discrete time signals. कि हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज यू हैव एक्स ऑफ एन, ओके, लेट्स सपोज दिस इज एक्स ऑफ एन।
this is 0, 1, this is 1, this is 2, and let's suppose this is 2, its amplitude is -2, and let's suppose this is 3 and its amplitude is, let's suppose, 0.5. Okay, so this is exapen. So we can write exapen as sigma n, okay, plus 2 sigma, ये हम बेहतर ये होगा कि हम इसको थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करें. So let's suppose this is exapen, which is what? Sigma n plus 2 sigma n minus 1 minus 2 sigma n minus 2 plus 0.5 sigma n minus 3. So this is actually your exapen. अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात कर रहे थे तो हमने 3 तरीके पढ़े थे. ये चौथा तरीका है, ठीक है, कि आप किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को एज ए सम ऑफ इम्पल्स लिख सकते हैं, सम ऑफ वेटेड इम्पल्स. ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिस इज एन इम्पल्स, दिस इज एन इम्पल्स, ये सारे इम्पल्सेस हैं, लेकिन वेटेड का क्या मतलब है, इसका वेट 1 है और टाइम डिले इसका 0 है. इसका टाइम डिले 1 है और वेट क्या है, 2 है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड 2 है. इसका वेट क्या है, -2 है और टाइम डिले क्या है, 2 है. इसका वेट जो है 0.5 और टाइम डिले क्या है, 3 है. सो दिस सिग्नल कैन बी रिटन एज दिस. ठीक है, इस सिग्नल को आप इस तरह लिख सकते हैं. नाउ वी हैव टू, आवर टॉपिक इज मैनिपुलेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. लेट्स सपोज यू आर गिवन एक्सापेन, ठीक है, और आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, एक्सापेन -1 फाइंड करना है, या लेट्स सपोज एक्सापेन -3 फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड एक्सापेन -3. सो आप क्या करेंगे, दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके हैं. जो मैं तरीका फॉलो कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, वो आसान तरीका है, उसमें सच कोई मेमोराइज करने वाली बातें नहीं. यहाँ पे आप देखें, फॉर आपको एक्सापेन गिवन है, आपने एक्सापेन -3 फाइंड करना है. फॉर एक सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फॉर n इज इक्वल टू 0 एक्सापेन इज इक्वल टू 1. नाउ यहाँ पे क्या है, n-3, n की जगह क्या आ जाएगा, n-3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा. x ऑफ n-3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. तो देखिए, आपने जस्ट n की जगह n-3 पुट करना है. ठीक है, सो n विल बी इक्वल टू 3, x ऑफ n-3 विल बी इक्वल टू 1. इसको आप लोग हाईलाइट करें. ठीक है, इसके बाद फॉर n इक्वल टू 0 के बाद क्या है, n इक्वल टू 1, व्हाट इज x ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट, 2. नाउ फॉर n-3 इक्वल टू 1, x of n-3 equal to 2. So it means if Rn is equal to 4, x of n-3 will be equal to 2. So इसको आप हाईलाइट कर दें. अब आगे, this was your signal. Now for n is equal to 2, for n is equal to 2, what was x of n? X of n was -2. Now for n is equal n-3, n की जगह आपने n-3 पुट करना है. So x of n-3 will be equal to 2.
यानी n इक्वल टू 5 पे x ऑफ n माइनस 3 विल बी इक्वल टू 2। इसको आप हाईलाइट करें। नाउ फॉर n equal to 3, x of n was what? X of n was 0.5. So n minus 3 equal to 3, x of n minus 3 will be equal to 0.5. तो n is equal to 6, x of n minus 3 will be equal to 0.5. अब आपने जो हाईलाइट किए है उस सिग्नल को आप प्लॉट करें। ठीक है, ये जो चार आपने हाईलाइट किए है ना, इसको आपने प्लॉट करना है। तो इसको आप कैसे प्लॉट करेंगे? दिस आपका सिग्नल कहां से स्टार्ट हो रहा है? n इज इक्वल टू 3। पहले आप इधर लिख के -1 0 1 2 3 4 5 6, दिस इज -1 0 2 3 4 5 6। n इज इक्वल टू 3 पे आपका सिग्नल क्या है? 1। n इज इक्वल टू 4 पे क्या है? 2। At n is equal to 5, it is 2. At n is equal to 5, sorry, it is minus 2. And at n is equal to 6, it is 0.5. So this is actually your x of n minus 3. This was given as x of n and you have to find out x of n minus 3. So in order to find x of n minus 3 from x of n, you have to do this operation. ठीक है, आप लोगों ने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं तो आपके पास ये सिग्नल आ जाएगा। अब इस सिग्नल को आप इम्पल्सेस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? दिस इज व्हाट x of n minus 3, you can write this as sigma n minus 3 plus 2 sigma n minus 4 minus 2 sigma n minus 5 plus 0.5 sigma n minus 6. So this is actually the manipulated signal. इसको हम कहते हैं manipulating the independent variable. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अपना ट्रांसफॉर्मेशन का जो टेक्निक है वो आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ मैनिपुलेशन। नाउ लेट्स सपोज अगेन वी आर गिवन द सिग्नल एंड और इस टाइम जो क्वेश्चन है वो थोड़ा चेंज है। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज x of 2n minus 6. Okay, this is x of n and you are asked to find x of 2n minus 6. So again this is very simple. You have just to start from n is equal to 0. आपने उस जगह से स्टार्ट करना है जहां से आपका ओरिजिनल सिग्नल स्टार्ट हो रहा है। सो फॉर n equal to 0, x of n equal to 1. So for अब इनकी जगह क्या आ जाएगा? 2n minus 6. For 2n minus 6 equal to 0, x of n 2
n माइनस सिक्स इक्वल टू वन। सो ये आप कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2n इक्वल टू सिक्स, n इक्वल टू थ्री। एक साथ 2n minus 6 will be equal to 1. Okay, so this was the first sample. अच्छा, उसके बाद आप जो है इस सैंपल पे आ जाए। फॉर n इक्वल टू 1, x of n is equal to what? It is 2. So for 2n minus 6 equal to 1, so x of 2n minus 6 will become, so it will be 2n will be equal to 7, n will be equal to 3.5, and this will be equal to x of 2n minus 6 equal to 2. अभी आप इसको नोट करते जाए, ठीक है। एंड में फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता जाऊंगा। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 2, x of n is what? X of n is minus 2. So for 2n minus 6 equal to 2, x of 2n minus 6 will be equal to minus 2, and 2n will be equal to 8, n will be equal to 4, x of 2n minus 6 will be equal to minus 2. इसको आप हाईलाइट करें। Now for n is equal to 3, what will be the value of x of n is equal to what? X of n जो है that is 0.5. So we are finding 2n minus 6 equal to 3, x of 2n minus 6 equal to 0.5. So it comes out to be n is equal to 4.5, x of 2n minus 6 equal to 0.5. So this is the manipulated signal, and now we have to plot this signal. Now we know that in discrete time signal the n must be an integer, ठीक है। n जो है ये इंटीजर होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, इट मस्ट बी -1 होना चाहिए, -2 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि फॉर n इज इक्वल टू 3, ये क्या है, 1 है। फॉर n इज इक्वल टू 3, दिस इज 1। फिर इसके बाद n इज इक्वल टू 3.5, तो n इज इक्वल टू 3.5 तो डिफाइंड ही नहीं है, तो इट्स मीन कि 3.5 इज नॉट डिफाइंड, तो यू कैन नॉट ड्रा दिस, सो इसको आप कैंसिल करें। n इज इक्वल टू 4 पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, दिस इज -2, और अगेन इसको आप प्लॉट नहीं कर सकते। So this is your signal, x of 2n minus signal, x of 2n minus 6. This is your signal, and you can write x of 2n minus 6 equal to what? Sigma n minus 3 minus 2 sigma n minus 4. इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। So this was all about the manipulation of a discrete time signal, और यहाँ पे जो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, the transformation here applies only on the independent variable. Okay?
So now let's move forward to do some other examples. Let's suppose you are given x of n that is equal to this signal. This is -1, this is 0, its amplitude is 1, its amplitude is -1, it is 1, its amplitude is 2, its amplitude is 18 is equal to 2. So this is x of n, and this x of n can be written as sigma n plus 1, or this sample plus, sorry, this will be minus sigma n plus 2 sigma n minus 1 plus sigma n minus 2. So this is the